Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारछि एबे मु प्लस 3 CBCS ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोज गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोज रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुछो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू पढे मध्ये परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रु तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्ये करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स आज रो टॉपिक रे आमे न्यूक्लियर मैजिक नंबर्स विषय रे पढिबा सो देखो ऑलरेडी ये मैजिक नंबर विषय आमे टिके धारणा पाइथिला जेतले आमे लिक्विड ड्रॉप मॉडल पढुथिला तारो किछरा लिमिटेशन बा ड्रॉबैक जेतले आमे डिस्कस करथिला देखा गला जे फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर द न्यूक्ली आर पोजेसिंग स्टेबिलिटी ओके से नंबर गुडा थिला 2 8 20 then your 28 50 82 and 126 ओके सो एठी ए मैजिक नंबर्स याकू कहा जाए ओके ए जो पांचटा बा छटा जो नंबर आसिला याकू आमे मैजिक नंबर कहिबा सो ए मैजिक नंबर रो कांसेप्ट हैला देखो जेतेबेला आमे गुटे एटम को देखुछु इट कंसिस्ट ऑफ positively charged nucleus and negatively charged electrons. The electrons are circulating in definite orbits जाकू कि आमे सेल कहू which are around the nucleus. अच्छा it was observed that atomic number जो z अछि when it is equal to 2 10 18 36 54 etc. okay माने for the case of your helium neon argon krypton xenon which are inert gases then the chemical element is most stable okay and it does not interact with other atoms in order to form a molecule okay तेणु करी माने inert gas याकू कहा जाए अच्छा after 1932 experimental observation रू जणा गला जे the nuclei जेमति मु कहली with the number of protons and neutrons equal to these magic numbers 2 8 20 50 82 126 are more stable than their neighbors okay ए नंबर को हमें मैजिक नंबर बोली की कहिबा okay and the nuclei are called the magic number nuclei okay so the nuclei in which the protons and neutrons number are magic numbers माने either proton or neutron हेले तो stability आसिला जदि proton और neutron number both are equal to these magic numbers then हमें से nuclei को कहिबा doubly magic nuclei okay माने दुईटा जाक प्रोटॉन संख्या न्यूट्रॉन संख्या मैजिक नंबर सहित समान अछि and these nuclei are more stable than the singly magic nuclei okay so ए मैजिक नंबर रो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस को एबे हमें डिस्कस करिबा so देखो फर्स्ट पॉइंट रे कहूची the study of stable nuclei provides an important evidence for the magic numbers the nuclei with number of protons or neutrons 2 and 8 माने for the case of helium and oxygen as you can see एठी atomic number टा 2 ଆଉ 8 ଅଛି ତା ସହିତ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ନମ୍ବର ବି 2 ଆଉ 8 ହିଁ ଅଛି ଓକେ 4 minus 2 is 2 16 minus 8 is 8 so respectively এটা ଆସିଲା case and these are found to be more stable than their neighboring nuclei so if we study the binding energy per nucleon versus the mass number graph ताले एठी हमें उठे smooth curve पाइबा but having many kinks माने माने जमरो जो maximum peak ताको हमें kinks बोली कहबा so these kinks are actually occurring at for the case of helium beryllium then your carbon oxygen and neon and also magnesium which are corresponding to a sudden increase in the value of binding energy suddenly increase ही जाउची एई सब न्यूक्लियन पाई okay so all these nuclei are हमें कहि परबा they are more stable nuclei than their neighbors okay because binding energy per न्यूक्लियन रो ग्राफ टा ही एई भले आसिला एक्सपेरिमेंटली जेते बळे हमें डिटरमाइन कला सेकंड पॉइंट को एबे देखिबा सेकंड पॉइंट रे कहूची द स्टेबिलिटी
of a nucleus is also related to its natural abundance. Okay, को हिसाब रे naturally ये क्षय हुए. So experimentally देखा गला जे some of the nucleus like your oxygen, calcium, then SN, PB, and lead, etc. They are having a magic numbers which are more abundant. Okay, एटा भी गोटे एविडेंस पाइला हमें. तापरे थर्ड पॉइंट को एबे देखिबा. थर्ड पॉइंट रे the nuclides having proton number, that means the atomic number Z corresponding to a magic number, will have highest number of isotopes. For example, যদি ଆମେ ଦେଖିବା in case of your calcium having Z equal to 20, it has 6 numbers of isotopes. Similarly, Sn বা tin having Z equal to 50 will have 10 numbers of isotopes. So गोटे particular nucleus ର stability ଏଇ ହିସାବରେ ବଢ଼ିଯିବ ତାର ଯେତେ बेसी stable isotopes रहिबो. Okay, similarly the nuclides whose neutron number n correspond to magic number will have also highest number of isotones. Isotones means same neutron number but different atomic number. For example, there are 5 naturally isotones in the case of n equal to 50. Okay, for the case of neutron number equal to 50, 5टा natural isotone थाए. Okay, then come to the fourth point. Suppose आमे एठी consider करिवा for the case of lead nucleus PB82208. So एठी atomic number Z अछि 82, neutron number n अछि 126, and it is a doubly magic nuclei because 82 is magic number, 126 is also a magic number. So it is highly stable nucleus, and the final product of 3 radioactive series is actually lead. Okay, जिते भी आमे radioactive series जोटा कि radioactivity रे आमे देखुछु decay करि जाउची, final product टा हमरो lead ही आसुची having Z equal to 82, and the most abundant lead isotope is PB82208. Okay, in general all the doubly magic nucleus which are helium, oxygen, calcium, then your lead, they are tightly bound and highly stable. Okay, now let us see the fifth point. एबे जदि आमे alpha particle जो emission हुए ताले तारो energy जदि देखिबा, energy of alpha particles which are emitted by the radioactive nuclei, that will provide strong evidence for the case of magic numbers, and the alpha particle energies are large enough so that when Dalton nuclides is magic number nuclide and small when parent is magic number nuclide. Okay, so alpha particle ro energy टा बढ़ी जिवो जेते बेले Dalton nuclei टा magic number nuclei हितिबो आ कमी जिवो जेते बेले parent nuclei टा magic number nuclei हितिबो. Okay, similarly जदि एबे beta particle रो भी हमें जदि देखिबा emission ताले एठी 6 point रे ये कहूची जे energies of emitted beta particles are found to be large when the daughter product of a radioactive element has magic number of neutrons or protons. So एटा भी गुटे experimental evidence. 7th point रे already हमें discuss करि सारिछु, binding energy per nucleon for nuclei of magic numbers is found to be large than the neighboring one. Okay, एबे आसीबा 8 point को. 8.3 रे एबे हमें separation energy देखिबा for the case of nucleon. हमें जानिछु nucleon माने मे बी proton ही पारे किंबा neutron ही पारे. So separation energy हला, it is the minimum energy which is required in order to separate a nucleon, that is a proton or neutron, from the nucleus. So this separation energy is found to be very large for the nucleus having the Z value or n value, that is the proton number or neutron number equal to magic number. On the other hand, this separation energy is found to be very small for a nucleus having one or more proton or neutron less than or more than your magic number. Okay, so एटा आसिला तमरा separation energy. 9th point रे similarly एठी कहूची जदि आमे neutron capture रो cross section देखिबा, then it is found that the neutron capture cross section are very small for the nuclei with neutron magic number as shown in figure. एठी देखो figure रे आमे y axis रे neutron capture cross section नीचु,
एक्स एक्सिस रे आमे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन n को नीचु सो अकॉर्डिंगली हमर ग्राफटा ई भलिया आछि ओके सो दिस इज फॉर द वैल्यू ऑफ 28 50 82 126 all these four are nothing but the magic numbers एठी देखो minimum रहउछि तमरा neutron capture cross section okay so it is obvious from the figure that for neutron nuclei with neutron number these 20 28 50 82 106 so the cross section of the capturing of a neutron is much lower than that of the neighboring nuclei ओके एटा 106 हबनी 126 हबो प्रिंटिंग मिस्टेक अछि मु एडिट कर देबी ओके तापरे पॉइंट नंबर 10 एठी कहूची द एनर्जी of the first excited state of nuclei with magic number of proton or neutron is unusually high first excited state as compared to their neighboring nuclei okay शेष पॉइंट रे एठी कहूची 11 पॉइंट रे एठी इलेक्ट्रिकल क्वाड्रापोल मूवमेंट विषय रे आमे देखिबा जदी गोटे न्यूक्लियस रो आमे जानिचु इलेक्ट्रिकल क्वाड्रापोल मूवमेंट होउची इट इज नथिंग बट द मेजर ऑफ डिपार्चर फ्रॉम spherical shape of its nuclear charge distribution spherical shape नही कि ये कोन हबो गोटे वर्तुळ बा ellipsoid of revolution हे जिवो so that ए quadrupole movement ता पॉजिटिव हेबो जदी शेप ता हमर प्रोलेट हला आ नेगेटिव हेबो जदी शेप ता यार ऑब्लेट हला ओके आउ जदी पूरा पूरी न्यूक्लियस ता स्फेरिकल रहिबो ओके ताहले ए क्वाड्रपोल मूवमेंट ता जीरो हे जिवो तो देखा गला ये जो इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट फॉर द केस ऑफ मैजिक नंबर न्यूक्ली दे आर फाउंड टू बी वेरी लो and you can take that nearly equal to 0 as compared to the other neighboring nuclei so this is showing that the magic number nuclei will have almost spherical distribution of charge okay तेणु करी एठी हमें देखला जे एटा भी उठे न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को देखौची so from all these points experimental evidence हमें sufficient पाई परला for the nuclear magic numbers thank you